Qazi wrote, married for last 11 years. It is a consensus marriage of the couple. Her blood group is B positive. She is gravida 3 para 2 plus 0 with previous 2 cesarean sections with last childbirth 4 years ago. She is not sure of her dates as she had irregular cycles. She was admitted through OPD of Lahore General Hospital on 1st of January 2020 with a gestational amenorrhea of 14 plus 2 weeks by 7-week scan and having deranged blood sugar levels for the last 2 weeks. My patient is a known case of diabetes mellitus for the last 4 years, and for this, she has not taken any medicines. She adapted lifestyle modification and lost 20 kgs of weight. After when she was diagnosed for diabetes, and she follows a strict dietary modification and exercise routine. She had her last HbA1c done before pregnancy, which was 6.5 at that time. My patient conceived spontaneously. It was an unplanned pregnancy confirmed by blood test when she started feeling nausea and vomiting. She went to the doctor nearby for her checkup and had an ultrasound done, which showed a normal intrauterine pregnancy of 7 weeks, according to my patient. She uh, she took folic acid during the last 3 months, and she does not give any history of raised blood pressure or raised blood sugar levels in the first 2 months. However, for the last 2 to 3 weeks, her blood sugar levels are deranged markedly, for which she came to OPD and got admitted. My patient is very well counseled regarding the dietary modification and exercise. He is now advised tablet glucophage 500 milligram 3 times a day and insulin regular 14 units 3 times a day and NPH 8 units in morning and evening. According to her, on these medication, her blood sugar levels have started to come in normal range. Her 6 blood sugar levels are done daily in the hospital, and she administers her insulin herself. She is counseled regarding the signs of hypoglycemia. My patient is gravida 3 para 2 with previous 2 C-sections. Her first child is a 9 years old baby boy delivered by emergency cesarean section at Lahore General Hospital due to raised blood pressure. However, she does not give any history of any intrapartum or postpartum complication. In that pregnancy, she did not take any medication for blood pressure as she did not visit any hospital for antenatal visits. Her second baby is a 4 years old baby girl delivered by elective section at Lahore General Hospital due to previous one C-section and diabetes mellitus. No antepartum, intrapartum, or postpartum complication in that pregnancy. Both babies were breastfed and vaccinated. My patient had irregular cycles for the last 2 years. However, she does not give any history of postpartum bleeding, dysmenorrhea, dyspareunia, no history of pap smear ever taken. She does not give any history of contraceptive practice. For medical history, I have already mentioned she is diabetic for the last 4 years. Her surgical history is non-significant except for the two previous C-sections she had. Her family, in her family history, her mother is diabetic. However, there is no other medical disorder in her family. Her drug history, she is not allergic to any drug. My patient is a non-smoker, having normal bowel and sleep. She has normal sleep, appetite, and bowel habits, and she is a non-smoker, non-addict. She lives in her own house with her in-laws. Her husband is a shopkeeper, and basic necessities of life are met with ease. On general physical examination, my patient is a young lady sitting comfortably on bed with a weight of 75 kgs and a height of 161 centimeters, making her BMI 28 kgs per meter square. Her blood pressure is 120/80. Her pulse is 90 beats per minute, and respiratory rate is 16
16 breaths per minute. She had a temperature of 98 degrees Fahrenheit. On examination, there is no pallor, chylonychia, clubbing, cyanosis, or jaundice seen. Orodental hygiene is satisfactory. All accessory lymph nodes are not palpable. Thyroid is not enlarged. Both breasts are symmetrical with normal nipple and areola complex. No palpable mass in all four quadrants of breast and axillary tail. No abnormal nipple discharge seen at the time of examination. First and second heart sounds are audible with no murmur or abnormal sound. Apex beat is lies in the fifth intercostal space, lateral to the mid-clavicular line. On chest auscultation, there is bilateral normal vesicular breathing with no added sound. On abdominal examination, the abdomen is soft. The abdomen is flabby, moving with respiration with centrally placed umbilicus, no visible pulsations no visible pulsation. A healthy phenestrine scar mark is present. On palpation, abdomen is soft and non-tender with a symphysiofunnel height of 14 centimeters. Sir, I'm done. Okay. Can you summarize your case? So 30 years old, married for 11 years, with blood group B positive, gravida 3, para 2 plus 0, with previous 2 C-section, last child born 4 years ago. Known case of diabetes for the last 4 years, admitted for deranged blood sugar levels at 14 plus 2 weeks by 7 weeks scan. Okay. Sir, I haven't told you the investigation. Should I mention them now? जी बेटा. Sir, her investigations show Hp A1c of 5.5, and so no, sir, otherwise everything is normal in her investigation. Her symphysiofunnel height is 14 centimeter. Which investigation would you like to do? Sir, या कौन सी करवाई हैं आप? so blood group with Rh affected blood group is B positive. Sir, complete blood count for hemoglobin in grams per deciliter, 11.4 grams per deciliter. TLC count 8,000. Platelet count 3 lakhs. I want urine complete for microscopy and biochemistry. In microscopy, I want pus cells which are 1 to 2. And in biochemistry, I want proteins which are negative, and glucose urea, it's also negative. I want viral markers, HbA1c, viral markers, HBS, AG, and anti-HCV, both are negative, and COVID PCR, it's also negative. And I want, HbA1c of this patient, and I want. आपने बता दिया 5.5. जी सर, वो मुझे पेशेंट ने बताया था. अच्छा. ठीक है सर, बस वही मुझे चाहिए और मुझे नहीं चाहिए. 6 BSL level chart which is done in the hospital. I need the drug sheet of the patient and dating scan. अच्छा. So why did you have the COVID PCR done in this case? Patient. So nowadays, every patient admitted in the ward has her COVID PCR done, because the pandemic is going on and we can't admit a patient with COVID in the ward. We need to isolate that patient even if we are admitting it. So any patient who even for observation in your hospital comes in, they need to go through an PCR test. So nowadays, every patient is having PCR done before admission. उसका rationale क्या है? So because if a patient is COVID positive, then they don't keep that patient in the ward. They keep that patient in isolation ward. अच्छा, what about those patients जो already vaccinated है? उनका भी कराते हो आप? और कोई symptoms नहीं? नहीं सर, उनका नहीं कराते हैं. फिर तो every patient, इनका क्यों कराया आपने? So she is not vaccinated.
She is not vaccinated. Yes. आपने पूछा था? Yes, sir. I asked her. Okay. अच्छा अब let's start with the management of investigation के अंदर what is this role of HbA1c? Sir, HbA1c. So HbA1c basically tells us about the previous 12 weeks levels of the sugar, and it has no. So it has a role in a sense that it's going to tell us that either the patient had well controlled blood sugar levels previously or not. Obviously, well controlled levels have a role in the pregnancy, so it's going to help us in identifying the previous record. Let's suppose कि अगर ये 5.5 की बजाय 8.5 आ जाता, फिर then what difference So would if happen? the levels are 8.5, then there is a risk of 5% congenital anomalies in this period of gestation. What kind And of these, anomalies are? Do you think? sorry, sir? What kind of anomalies do you are? Cardiac anomalies, neural tube defects, and yes, sir, these are the anomalies. नहीं फिर आप क्या what would you have done differently? Sir, if the HbA1c would have been 8.5, I would have counseled the patient that there is a 5% chance of congenital anomalies in the baby. And if she was not pregnant, I would have counseled her not to get pregnant before she has her HbA1c in the normal ranges. नहीं बेटा आप तो pregnant है ना? So she's So, come to you in pregnancy with mm, something like 14 weeks, and how can you tell her not to get pregnant now? no, sir, I'm telling if she was not pregnant and if these were the levels. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इसी स्टेज के अंदर इसकी 5.5 की बजाय वैल्यू 8.5 आती तो what would you do? So I will tell the patient that her levels have not been well controlled previously, and due to this, she can have an anomalous baby, and she can have a risk of miscarriage. And yes, so this is what I will counsel the patient about. And would you like to do anything different after counseling? So I'm going to advise her for strict blood sugar level controls. Achha, good. And then I'm going to advise her for the anomaly scan at 20 weeks. So for the next 6 weeks, we will just wait for the ultrasound to come in and then decide. Is that so? Yes, sir. जो न्यूरल ट्यूब इफेक्ट्स होते हैं वो कब आते हैं? So When can they be picked up on the ultrasounds or by other tests? sir, on 14 weeks, knuckle translucency is done. वो आपने कराई? So it is not available in our hospital. How is it possible कि it's not available in the hospital? ये तो simple ultrasound finding है, इसमें कोई ऐसी rocket science तो नहीं है. सिर्फ हमने कभी कराई नहीं है ना, कभी लिख के दिया उन्होंने ऐसी. I think you need to go back to your radiologist, ask KG. It's a simple thing. It's not a you don't need to have a very hi-fi machinery for that. I don't think so. जी ये सर, तो सिंपल easy स्कैन है. से होती है. अच्छा अगर let's suppose आपका न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी वैसे होता कितना है? सर वो नहीं मुझे पता. ओके, जब आप स्क्रीनिंग करते हो एनोमलीज की, किस तरह की जाती है? सर स्क्रीनिंग फॉर एनोमलीज सर ट्रिपल टेस्ट होता है. When to do the triple test? और आजकल ट्रिपल टेस्ट करते हैं? सर आई डोंट नो अबाउट इट. You don't know about it. अच्छा चलो, ट्रिपल टेस्ट के अलावा और क्या करते हैं?
और कब किया जाता है? सर जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं वो सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं ओके, एंड सर which उसके are which are सर इसमें सर वो सर आई एम अनएबल टू रिकॉल द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स आपने आज तक कभी किसी पेशेंट के हार्मोन्स नहीं कराए? नहीं सर हमने नहीं कराया कभी नेवर एवर इन योर सर 4 years? नेवर नेवर अच्छा, वो किन पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो कराने जरूरी होते हैं, मैंडेटरी? बाकी मतलब लेट्स सपोज मे बी समथिंग ऑप्शनल हो कि कुछ में जिसमें आप सर ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर वी थिंक दैट देयर इज रिस्क ऑफ congenital anomalies like लाइक if a patient is more than 40 years of age then she is going to have risk of Down syndrome and if she has history of any Down syndrome previously in any pregnancy then we are going to get it done and sir इस केस में भी करा सकते हैं like she's having diabetes so she has a risk factor we can get it done cousin marriage भी है इसकी तो yes we can get it done चलो इतने सारे आपने इन्यूमरेट किए। Mhm. आई यू श्योर के लास्ट ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए फॉर हाउ मेनी इयर्स जितनी भी आपकी होगी इसमें आपके पास इससे पहले एक पेशेंट भी नहीं आया ओपीडी? इस तरह का हाँ, नहीं sir there have been patients like this तो फिर क्या करते हो आप उनके साथ? इफ यू sir डोंट डू we don't do such tests फिर क्या करते हो? so we counsel the patient अच्छा, किस तरह काउंसलिंग करते हो? दैट इज इंटरेस्टिंग सर। sir mostly patient come in the second trimester बेटा कोई गलती से अगर आ जाती है, लेट्स सपोज ये भी तो आपके पास आई गई है ना, तो गलती से अगर आ जाता है अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उसको रिक्वायरमेंट अगर लेट्स सपोज यही आपने जो इतने रिस्पेक्ट्स बताए, तो फिर हम किस तरह करते हैं उसको? क्या करते हो? आपने कह दिया ठीक है हम तो कराते ही नहीं, दैट इज परफेक्टली फाइन। फिर व्हाट डू वी डू टू द पेशेंट? sir sorry sir I don't know नहीं नहीं इसमें just मैं तो सिर्फ आई एम जस्ट फॉर माय ओन इंफॉर्मेशन ट्राइंग टू फिगर इट आउट। जब आपको ऐसा आएगा तो हाउ वुड यू? सर इस तरह का पेशेंट आएगा तो हम उसको काउंसल we'll obviously tell her that these are the tests available and if she can get them done then she can have them up. I don't know what we'll do. व्हाट डू यू मीन कि बेटा अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस टाइम रखने में मैनेजमेंट इज क्या करें? Sorry sir. Let's move on to the management part. How will you manage this patient? Sir, this patient, sir, first of all, I am going to counsel this patient that she is having a high risk pregnancy with diabetes and previous 2 C-sections. And I'm going to counsel her regarding the control of her blood sugars levels for the rest of her pregnancy. Now she is at 14 weeks, and I'm going to tell her that she is at a risk of having. Stillbirths, miscarriage, and congenital anomalies if her blood sugar levels are not well controlled. And then I'm going to do her blood sugar levels, and I'm going to, when her blood sugar levels are well controlled, then I'm going to discharge the patient for home, and then I'm going to call her back after 2 weeks to see her blood sugar levels, and then she's going to be at 16 weeks. And then I'm going, if her blood sugar levels are all right, then I'm. से पहले आप क्या पेशेंट को बताओगे? What will you tell the patient? Would you like to just say anything to the patient before you discharge the patient? So I'm going to tell the patient that if her blood sugar levels are deranged, that is, she's having she's having fasting blood sugar levels more than 95.5 or a postprandial level of 140, then she should come back in the OPD, and then obviously we are going to see for any increase in the
insulin and a change in the dosage. And I'm going to counsel her that yes sir, I'm going to tell her this, and I'm going to counsel her to follow the dietary modifications, and she should do 30 minutes walk daily, as the 30 minutes walk is going to improve her blood sugar levels. And yes, so this is what I'm going to counsel her. Anything else? Sir, I'm going to counsel her regarding the signs of hypoglycemia, and my My patient is patient is already already sir, the echo aa echo rahi hai, area please is turn the turn mic the mic on. on. Amjad Ali, kindly turn off the mic. Yes. So I'm going to counsel her regarding keeping the insulin in the fridge, and I'm going to counsel her regarding. So she already knows how to inject insulin, and she has a blood glucometer, so she is well aware of how to monitor her blood sugar levels. So I'm going to tell her to maintain a blood sugar level chart, so that I can see her when she comes to me. बेटा आपने अभी तक उनको ये बताया कि कितनी दफा उनकी शुगर चेक होनी चाहिए? वंस अ वीक, वंस अ मंथ, हफ्ते में 2 दफा, दिन में 3 दफा? Sir, yes, sir. I have told her. Sir, she's already counseled. She already checks her fasting blood sugar levels, one are postprandial and pre-meal. She already checks all the 6 levels. And she will continue checking all these 6 levels for the next 2 weeks. Sir, if the according to the NICE guidelines, the patient who is diabetic should check the levels. अगर वो सारे नॉर्मल भी आते रहे तो फिर भी वो 6 टाइम चेक करती रहेगी. Means if they are normal, then she can opt for 3 sugar levels. How would she know that, बेटा? यही तो बातें बतानी है अपने पेशेंट को. जी सर. कि वो अगर 2 हफ्ते तक 6-6 दफा करती है. जी सर. 14 into 6 करो, क्या बनता है? So 84. So she will get herself picked almost about 84 times before she comes back to you. Mm-hmm. Is that okay? No, sir. तो फिर वो किस तरह चेक करेगी? Sir, when her levels are normal, then she can switch to a few levels like fasting, and 1 hour postprandial. Like if किसी दिन वो लंच का चेक कर ले, किसी दिन वो डिनर का चेक कर ले, and she should however check 11 p.m. Before going to bed daily. अच्छा, 16 weeks पे आपके पास आ जाती है, then what will we do? Sir, 16 weeks में आ जाती है. I am only going to check her blood sugar levels. If they are well controlled, then I am going to send her back and call her at 20 weeks for anomaly scan for the outflow, for the chambers of the heart and 3 vessels and outflow tract. What is the best way to see the heart at this stage? Fetal heart? Sir, with the scan. कोई स्पेशल स्कैन होता है उसका? So simple ultrasound से चेक कर लेते हैं हम. कोई स्पेशल स्कैन होता है इनमें ऐसे पेशेंट्स में? So fetal echocardiography. वो इनकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Sir, नहीं, इनकी नहीं होनी चाहिए. Her blood sugar levels were well controlled previously, so I don't think she should get her fetal echocardiography done. Okay. ऐसा कौन सा टाइम होता है ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जहां पे हार्ट की एबनॉर्मलिटीज बनती हैं अगर आपके ब्लड शुगर डिरेंज्ड हो? Which time? Sir, 8 to 12 weeks ही होता है organogenesis. Okay. Sir, during that period बनते हैं. इस पेशेंट के जो थे उस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल थे? Yes, sir. According to my patient, her blood sugar levels were well controlled at that time. फिर इसके कब खराब हुए हैं ब्लड शुगर लेवल्स बेटा? Sir, इसके blood sugar levels last 2 weeks से खराब हुए हैं, like after 12 weeks.
तो इसका मतलब है इसको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सर लेस लाइकली, बिकॉज ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड तो खत्म हो गया ना। Unbelievable. Okay. So that means she does not require to have fetal egg. Okay, fine. चलो हम आगे चले जाते हैं। जी सर। अब फिर आगे क्या करेंगे? So 20 weeks pe we'll get her anomaly scan done, and if it's normal, then good enough. And I'm going to call her after 4 weeks, and then I'm going to see her. So ये 4 weeks के बाद 24 weeks पे हो जाएगी, and then I'm going to again see her blood sugar levels, and I'm going to see if she needs any increment in the levels. And sir, after जी sir. ठीक है, ठीक। Let's continue. So after 24 weeks, I'm going to again call her at 28 weeks if everything is going normal, like her blood sugar levels are normal. And then, sir, after 28 weeks, I'm going to get her growth scan done. And how do we do the growth scan? So growth scan जो है उसमें fetal biometry करते हैं। मेरा तो ख्याल है हर अल्ट्रासाउंड में बायोमेट्री होती है वैसे। सर जी सर, हर अल्ट्रासाउंड में होती है, बट फॉर ग्रोथ स्कैन वी डू अ स्कैन एट लाइक 28 वीक्स, एंड देन वी आर गोइंग टू रिपीट द स्कैन आफ्टर 2 to 3 weeks, एंड बेसिकली इट्स दीज आर सीरियल स्कैन्स ऑन विच वी मॉनिटर के बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, एंड वी मॉनिटर इट ऑन द बेसिस ऑफ द बायोमेट्री। Okay, so you want to monitor the growth of this baby by doing serial ultrasound. Yes sir, and like I want to see her liker volume as well. अच्छा। Let's suppose में AFI इसका 6 आ जाता, then what we're gonna do? So 6 AFI is normal. What is the normal AFI और AFI करते किस तरह? Sir, normal AFI, it has a range of from 5 centimeters to 25 centimeters, and it is done by an ultrasound scan, and we measure the like a volume in 4 quadrants, and दूसरा ये है कि वी डू मीन वॉल सर डीपेस्ट पूल जो है उससे मेजर करते हैं हम। Okay. दिस इज हाउ इट्स कैलकुलेटेड। नहीं, डीपेस्ट पूल किस तरह करते हो टेक्निकली, जरा मुझे दोबारा से बताओ। अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम जो फीटल फ्री पार्ट्स होते हैं उधर से हम उसको पूल जो है वो मेजर करते हैं। मेजर कर लिया, फिर हमने क्या करना आगे? सो वो मेजर करके हम एएफआई बताते हैं। अच्छा, हमने पॉकेट मेजर की, लेट्स सपोज वो 2 सेंटीमीटर की आगे, फिर तो ये कम है। ये कम है जी सर। तो फिर क्या करेंगे? सर we are going to see कि why her AFI is low. It means that there is some placental insufficiency going on. So we are going to see for anything which is causing it. अगर एक पॉकेट लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर की आ जाती, दैट व्हाट डज दैट मीन? मुझे आपने खुद कंफ्यूज कर दिया वैसे। सर एक पॉकेट 2 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब सर वी आर नॉट गोइंग टू काउंट सिंगल पॉकेट, वी आर गोइंग टू काउंट द पॉकेट्स इन 4 वही तो मैं आपसे तरीका पूछ रहा हूँ कि किस तरह करेंगे, एक पॉकेट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे? सर 4 क्वाड्रेंट्स में लेते हैं, अच्छा, बस फिर उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं। किस में? सर वो सारी जो पॉकेट्स हैं उनको इकट्ठे ऐड कर देते हैं, दैट इज द लाइकर वॉल्यूम बेसिकली। ओके, लेट्स सपोज एक पॉकेट 4 आ रही है, 3 आ रही है और 2 आ रही है और 1 आ रही है।
कितना बन गया AFI? So 16. 16. Okay. And sorry बेटा एक सेकेंड. जैसा मैंने कहा लेट्स सपोज एक पेशेंट का 6 आ जाता है AFI, फिर हम आगे क्या करेंगे? शी इज एट 28 वीक्स पे आई थी, AFI इसका 6 आ गया. So 28 weeks पे sir AFI 6 is normal. So 5 से 25 is normal. ओके फाइन. फिर करोगे क्या आप? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ. Sir, sir, we are going to sir, continue the pregnancy, and sir, ये भी हो सकता है the patient is not well hydrated because maybe that's why she is having the lower limit of AFI. So we are going to check her blood. Sir, throughout the pregnancy, we are also going to keep a check on her blood pressure. How do you assess hydration of a patient? Hydration of a patient. आप ही ने कहा ना कि जिसकी हो सकता है हाइड्रेशन अच्छी ना उसकी वजह से उसका AFI कम हो जाता है. Sir, I'm going to ask the patient that if she is taking water or not. मैं तो पानी पी रही हूँ. यही कहेगी बेटा. What is the relationship between hydration and AFI? सर हाइड्रेशन और AFI की कोई एसोसिएशन नहीं है, बट इट्स जस्ट empirically done because few studies suggest that improving hydration improves the AFI. कौन सी स्टडी आपने पढ़ी है जिसमें आपने पढ़ा? सर EBM में ऐसे लिखा हुआ है improving hydration improves the. So there is no association, but this is what we do. अच्छा चलो लेट्स सपोज मूविंग ऑन. 28 वीक से आगे लेके चलें क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया. देन वी हैव टू So फिनिश इट ऑफ. 28 weeks से आगे I'm going to call her at 32 weeks. Then again I'm going to assess her blood sugar levels, and I'm going to advise her for urine complete as well, and do her complete blood count as well. And I will monitor her blood pressure, and I'm going to see that her fundal height is growing properly according to the gestational age or not. I'm going to see the fetal hearts, and I'm going to ask her about any urinary tract infection or not, and then I'm going to call her again at 4 weeks, and I'm going to get her ultrasound done. I'm going to see her Liker volume placental localization at that ultrasound, and I'm going to review the whole patient after 34 weeks. If everything is going normal, I'm going to call the patient at 36 weeks. And AFI 4 हो गया. AFI 4 हो गया. Sir, if her AFI is 4, I'm going to ask her about if she's having any leaking, any discharge. She says no. No discharge. Discharge है पर leaking नहीं है. Sir, I'm going to assess the discharge by doing a pus speculum examination and see if it is if there is any pooling of Liker or not. And sir, I'm going to sir, I'm going to admit the patient and do her Doppler ultrasound. किस चीज का डॉक्टर करना चाहते? It's a Doppler of the umbilical artery. What do you want to see in the Doppler? Sir, I want to see the SD ratio of the of the in the Doppler scan. 3.8 आ. Sir, 3.8 सर ये तो ज्यादा है. फिर कम कर देते हैं अगर आप कहते हो. सॉरी सर.
नहीं बेटा, पेशेंट को क्या कहें हम? So I will tell the patient that her SD ratio is increased, and there is some placental insufficiency going on, obviously, because of which it is happening. And then I'm going to admit the patient. I am going to monitor the patient and the fetus, and I'm going to see if there is any raised blood pressure or blood sugar levels are deranged, and I'm going to um, assess the baby. If its fetal hearts are normal, I'm going to ask the patient if she is having normal fetal movements. And so, even if it's 4, I'm going to continue the pregnancy, keeping the fetal monitoring and maternal monitoring well. And I'm going to try to take this pregnancy to term. And I'm going to give her steroid cover as well, keeping in mind that her blood sugar levels can be deranged. I'm going to increase the dose of her insulin by 20% to control her blood sugar levels. And uh, so jab tak uska everything, even if it's 4 and her uh, um, um, sir जब तक मैं प्रेगनेंसी को टर्म तक लेके जा सकती हूँ, आई विल ट्राई टू टेक इट टू टर्म. क्या आपने 4 दिन के बाद दोबारा रिपीट किया अल्ट्रासाउंड, उसमें AFI2 हो गया? सर 4 दिन के बाद सर 36 प्लस पे हो गई ना, फिर 36 प्लस. बेटा 34 के बाद 4 दिनों के बाद 36 तो नहीं होता ना? अच्छा 34 वीक्स. हम 34 पे ही थे ना अभी. सर मेरे जहन में 36 था, मैं 36 पे आगे चल रही हूँ. चलो, आपकी तो कोशिश है 38 पे हो जाए, मैं जल्दी से सेक्शन कर दूं. सर 34 के ऊपर अगर 3.4 तक नॉर्मल होता है FI, सॉरी SD रेशो. ओके, तो मैंने 3.8 कहा था. जी सर 3.45 तक नॉर्मल होता है 34 पे. फिर क्या पेशेंट को घर भिजवा दें? नहीं सर, मैं उसको एडमिटेड ही. जी सर. Should we send the patient to home then? नहीं सर, उसका AFI जो है ना, इट इज आपने कहा 2 हो गया AFI, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड हर, आई एम गोइंग टू कीप हर इन द हॉस्पिटल. आई एम गोइंग टू डू हर fetal monitoring by doing her CTG twice daily and biophysical profile on twice weekly. And I'm going to assess the patient for her blood sugar levels. I'm going to monitor the fetus, and I मेरी तो यही कोशिश है, I'm going to take her the pregnancy to term, like 34 से. CTG फ्लैट हो जाती है आपकी. लेट्स सपोज रात को आपने 10 बजे CTG की, उसकी फ्लैट हो, फिर आप क्या करेंगे? Sir, I'm going to repeat the CTG after hydration of the patient, because at times sleeping भी होता है baby, तो it's not. I'm going to repeat the CTG after hydration and oxygen. ओके, आपने हाइड्रेशन भी कर दी, फिर भी फ्लैट हो रही है. अब 11 बज गए रात. Sir, I'm going to deliver the baby. कैसे डिलीवर करो? Sir, I'm going to deliver the baby through emergency lower segment cesarean section. And I'm going to involve the pediatrician and anesthetist, and then I'm going to deliver the baby. आपके पीडियाट्रिक्स आ जाते हैं रात के 12 बजे बेबी सीट पर? सर इमरजेंसी में होते हैं जो हमारी कॉल अटेंड करते हैं. अच्छा, हमारे थिएटर के साथ ही है. ओके, चलो हमने पीरियड्स पे आ गया. सेक्शन में व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर वी लुकिंग फॉर? So my patient is having previous 2 cesarean sections, so there's a lot of risk that she's going to have multiple adhesions, and yes, this is the risk I'm going to face while doing the surgery. And for that, I'm going to be vigilant during opening the abdomen, and I'm going to carefully open the abdomen
then I'm going to incise the lower segment, and then I'm going to deliver the baby, and then I'm going to hand over the baby to the pediatrician. I'm going to deliver the placenta, and I'm going to ask the anesthetist to give 10 units of syntocinon. And after that, I'm going to stitch the stitch the uterus, and I'm going to close the abdomen. अच्छा And after that, I'm going to shift the patient to the recovery, and then I'm going to see the patient for the vital monitoring. I'm going to do her blood sugar levels too early, so as my patient is she's going to be MP, obviously. And to the for the baby, I'm going to see for any hypoglycemic events in the baby for 2 to 4 hours. I'm going to see if the baby is not having hypoglycemia episodes. His blood sugar levels should not be below 36 milligrams per deciliter. And after that, sir, I am for the my patient, I am going to lower her dose of insulin by 50% after she breaks her NPO. And then I'm going to advise her to do her blood to revert to the original to lower doses of insulin. And after that, I'm going to advise the patient regarding the breastfeeding and breastfeeding of the baby, and I'm going to advise her for contraception. And yes, sir. चलो ठीक। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ आपका वाइवा कैसा होगा? सर मैं फंस गई थी। क्यों फंस गए थे और किधर फंस गए थे? सर मैं उधर फंस गई थी जहां आपने मुझसे पूछा था वो नकल ट्रांसलेंसी और वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं कंजेनिटल एनॉमलीज के लिए, उधर मैं फंस गई थी। और उसके बाद मैं AFI पे फंस गई थी और SD रेशियो पे मैं कंफ्यूज थी। देखो बेटा, ये आपका वो केस है जो नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता। दिस काइंड ऑफ केसेस नॉर्मली वो एग्जाम में अगर कोई भी इनको पेशेंट ना हो तो फिर देन दे डू इट, क्योंकि नॉर्मली ऑब्स्टेट्रिकल केसेस के अंदर दे डोंट गिव सेकंड ट्राइमेस्टर पेशेंट्स। जी सर। वो और जब वो ऐसा केस आ जाता है फिर तो वो आपका एग्जामिनर की और जो आपका कैंडिडेट है उसकी भी डिपेंड करता है कि उसको वो कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो दैट बिकम्स एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी है नहीं। यही केस लेट्स सपोज अनश्योर के साथ होके 28-30 वीक्स पे आ जाती है विद डायबिटीज, और ये वो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन इस सारी कहानी में आपको कम से कम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग तो शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आज आप अगर जाते हो LGH अपने जाके पूछो कि जी कि आप निकल ट्रांसफरेंसी करते हैं, किस तरह करते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक मेजर की जाती है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी सर। AFI का आई एम श्योर के वेरी सिंपल कि जी कितना कहाँ पे होना चाहिए और अपना है। Yes, 6 is not AFI which is you bring it कि जी कि ये नॉर्मल लिमिट में बिल्कुल है, लेकिन इट इज बिल्कुल ऑन द लोअर नॉर्मल लिमिट्स, एंड स्पेशली इन 28-29 वीकर्स में या 30 वीकर्स के अंदर इतना छोटा AFI हो, यू जस्ट कांट लेट इट गो। जी सर। ये वो मरीज नहीं है फिर जिसको आप 4 हफ्तों के बाद दोबारा बुलाओगे कि देखो यू नीड टू फिगर इट आउट कि इसका AFI कम क्यों हो रहा है, इसकी एनॉमलीज क्यों हो रही है। तीसरा, जो एनॉमलीज आपने कार्डिक की देखनी है 20 वीक्स, वो तो रिकमेंडेशन पहले आया करती थी कि जी आप फीटल एको कराओ, लेकिन दूसरी अब ये 3D अल्ट्रासाउंड 2D अल्ट्रासाउंड काइंड ऑफ जिसमें 4th चेंबर ऑफ द हार्ट क्लियरली विजिबल हो, तो उसमें आप कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसमें प्रीवियस कोई हिस्ट्री हो उसकी एनॉमलीज की, लकीली इसमें नहीं थी, में उसके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जिसमें इसकी थी। आपने कहा कि जी वो तो कह रही थी कि मेरे पहले 12 हफ्ते के बाद ठीक रहा, 12 हफ्ते के बाद के जब दूसरा दिन हुआ तो मेरी शुगर खराब होगी। शुगर इस तरह खराब एकदम नहीं होती,
शुगर, और नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट के अंदर उसका या तो उसने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर रिकॉर्ड चेक करके मैं आई वुड बी एटलीस्ट उनको ऑफर जरूर करूंगा कि जी आप इसकी करके ये करें। दूसरा, जो आपके न्यूरोट्यूल डिफेक्ट्स हैं, जो मैं आपसे शुरू में पूछना चाह रहा था, कई बार अगर उसकी एनसेफली हो जाती है या उसका स्पाइना बाइफिडा है, ये है, वो इवन अच्छे अल्ट्रासाउंड वाले 14 वीक्स पे भी पिक कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट टिल वो करो। और अगर जो ये ओपन वाले होते हैं उनके लिए कौन से अल्फा फीटो प्रोटीन्स कराने हैं, नहीं कराने, ये सारी चीजें यू शुड एटलीस्ट नो। जी सर। और अगर आप ये कह रहे हो कि जी कि ये सारी चीजें सिंपल मेरे तो डिपार्टमेंट में होती नहीं है, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप इस डिपार्टमेंट से निकल के कल किसी और डिपार्टमेंट में भी तो जाओगे ना। जी तो आप सर। उस डिपार्टमेंट में जाओगे, कम से कम आपको बैकग्राउंड पता तो हो। चलो ठीक है, नहीं होता है, टोटली एग्री, कुछ चीजें हैं जो आपकी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए जब आप जाओगे और वहां जाके जब आप कंसल्टेंट बन जाओगे, तो फिर अगर आपसे पूछा जाएगा जी इसका एंटी कितना होना चाहिए या कम होना चाहिए, या उसके कौन से ब्लड टेस्ट होने चाहिए, या कोई 40 साल की आ जाती है, या उसका डाउन का पहले बच्चा है, या वॉट एवर जो भी आ जाता है, उसके लिए आपने कौन से टेस्ट करने हैं। आपने पहले ट्रिपल टेस्ट होता था, फिर उसका पापा टेस्ट होता था, वो सारे के सारे यू हैव टू काइंड ऑफ नो। एंड एटलीस्ट सिर्फ मेरा तो नहीं ख्याल, आई डोंट नो कि कितना काउंसिल करें कि जी के काउंसलिंग में कि जी के हाँ आपके ये टेस्ट तो होने चाहिए, पर क्योंकि हमारे पास होते नहीं है, अब हम इंतजार करेंगे जब बच्चा डिलीवर होगा तब देख लेंगे कि जी इसमें फला अनोमली तो नहीं। उस अनोमलीज को सबको देखने के लिए या करने के लिए यू शुड एटलीस्ट ऑफर द पेशेंट कि हाँ जी ये है, हमारे पास रेस्पॉन्स नहीं है तो आप फला जगह चले जाओ। जी सर। इसी तरह अगर आप 34 वीक्स पे बैठे हो और आपका इस तरह AFI कम आ रहा है और आपकी नर्सरी की सर्विसेज ऐसी नहीं है जो उनको सप्लाई कर सकती हैं या उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, तो ऑफ कोर्स यू शुड नो दैट द प्लेसेस वेयर दोज मदर और द बेबी कैन बी शिफ्टेड आफ्टर द डिलीवरी टाइम, कि जी आप फॉर द बेस्ट ऑफ द चांसेस उसके बाद वो कहे कि नहीं जी मैं तो यहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। लेकिन उसकी जब काउंसलिंग आप करते हो उस वक्त आपने कोई होलिस्टिक पिक्चर देखने के बाद फिर देन यू डू व्हाट द बेस्ट फॉर द पेशेंट। एंड ऑफ कोर्स उसकी ये नहीं आप उसे कहोगे कि आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, लेकिन आई एम श्योर कि देयर आर अदर गुड हॉस्पिटल्स जो अंडर लो सर्विसेज में आपके हॉस्पिटल के आसपास होंगे, दे कैन प्रोवाइड द केयर व्हिच इज रिक्वायर्ड एट 34 वीक्स और ईयर। तीसरा, अगर डॉक्टर की हमने बात की थी, ये सुन बॉर्डर लाइन है, उस स्टेज के ऊपर आई थॉट कि दो चीज़ों का आपका जिक्र जरूर होना चाहिए था। एक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का क्या रोल होता है, उसका आपको देखना चाहिए ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले एक सर्जरी हुई है PIH की वजह से, पहली वाली। जी सर। There's a likely chances she would have end up with raised blood pressure off and on, बीच में होना चाहिए था अगर पहली में हुई है। दूसरी में इसकी डायबिटीज के लिए हुआ है, तो तीसरी में मेरे ख्याल है दोनों की कॉम्बिनेशन को आपने मद्देनजर रखते हुए सोचते हुए करना है, ताकि वो ब्लड प्रेशर का आपका रहेगा तो उसको आगे आप लेके उसे लेके चलोगे। उसमें प्रोटीन यूरिया उसकी सारी चीजें वो जितनी होती हैं प्रोफाइल, उसके ऊपर आपने यू नीड टू कीप एन आई एंड देन यू डिसाइड अपॉन द केस। चौथा, इन द एंड जब ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, पहले 2 बच्चे भी हैं और 11 साल उसकी शादी को हो गए हैं, 30 साल उसकी उम्र हो गई है, मे बी बिफोर सेक्शन आपका PPI-CD के बारे में इसका जिक्र जरूर आ जाना चाहिए। नॉट नेसेसरली यू हैव टू डू इट, बट यू टॉक टू द पेशेंट कि जी कि हाँ जी ये कॉन्ट्रासेप्शन ये, एंड ऑफ कोर्स अगर उसके एक मेल है एक फीमेल है और दोबारा मेल हो जाता है, वॉट एवर चॉइसेस एंड ख्वाहिश ऑफ आई डोंट थिंक सो लाइगेशन इज द फर्स्ट चॉइस, बट इट शुड बी ऑप्शन में उससे बात जरूर करनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन की before we go in for the surgery and finally that choice is totally patients कि ये करना चाहते हैं कि नहीं करेंगे। जी सर। ठीक है, या अगर वो ये दोनों चीजें नहीं लिख पाती तो आप कम से कम डिस्चार्ज से पहले, बिकॉज वो सारी इसकी हिस्ट्री देखते हुए कुछ और नहीं तो कम से कम ये डाल के उसको भिजवा दोगे, या उससे कोई अपना क्या कहते हैं वो शॉट लगा सकते हो फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जी सर। स्ट्रॉन्ग का करके उसके बाद फिर उसके बाद रिसेस करके दो। जी सर। लेकिन सिर्फ ये कह के एग्जाम में आपकी जान नहीं बच सकती कि जी हमारे डिपार्टमेंट में ये चीज़ होती नहीं इसलिए हम तो नहीं करेंगे।
जी सर। आप ये जरूर कह सकते हो कि जी आइडियल सिचुएशन के अंदर यस ये सब चीजें इस तरह होंगी। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हम ट्रेनिंग में वो अवेलेबल नहीं थी, दैट इज फाइन, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। सर सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक जी क्वेश्चन है कि जैसे ये पेशेंट डायबिटिक है, नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ है, तो हम लोग अगर ऑन एग्जामिनेशन हमें कोई मतलब आईयूजीआर के सिम्टम्स नहीं मिलते, तो हम लोग फिर भी बेसलाइन एज हम लोग इसका डॉपलर करवाएंगे? डॉपलर फॉर व्हाट बेटा? सर क्योंकि शी इज़ अ नोन केस ऑफ डायबिटीज़ है और इतनी 15 ईयर्स है, तो शी आर प्रोन के शी कैन डेवलप आईयूजीआर। तो एज अ बेसलाइन क्या हम लोग आईयूजीआर में मतलब एज अ डॉपलर करवाएंगे इस ये पेशेंट आप को? कब कराना चाहते हैं? 20 वीक्स पे कराना चाहते हैं? नो नो नॉट एट द 20 वीक्स सर, तो 32 और 30 वीक्स पे, 28 वीक्स पे, 24 टू 28 वीक्स पे। एज अ रूटीन जी 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 सर। नॉर्मली जब हम सारे ट्रेन हो रहे थे तो अब हमारे ज़हन में ये होता था कि जब लाइकर कम होगा तब आप डॉक्टर कराओगे। दैट एग्जैक्टली। वाज माय, हाँ, दैट वाज आवर आइडिया। लेकिन नाउ वी हैव सीन पेशेंट्स जो इस तरह के जो ये होते हैं जिनमें थ्रोम्बस बने होते हैं, जिनमें लाइकर इज नॉर्मल लेकिन स्टिल डॉपलर का फ्लो जो है इट कैन बी अफेक्टेड। सही। सर तो मेरा ख्याल है कराया जा सकता है, लेकिन उसको कराने के लिए यू नीड टू गो बैक एंड फाइंड सम ऑथेंटिक अपना जस्टिफिकेशन। रिकमेंडेशन फॉर दिस सही। बिफोर यू गो एंड से द एग्जाम। सर सर क्योंकि यही अगर आप एक एग्जाम, सॉरी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सर। एग्जाम में करोगे तो जी आपका जो कन्वर्सेशन चली जाएगी या वाइवा चला जाएगा वो ये होगा कि जी अच्छा अगर ब्लड फ्लो स्लो होता है तो बेबी के इफेक्ट क्या होता है, आप कहोगे जी कि उसका तो लाइकर कम हो जाता है, उसकी आउटपुट कम हो जाती है, फला 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 फला। लेकिन वो जी कहेंगे उसमें तो लाइकर तो उसका नॉर्मल है, तो फिर आपने क्यों कराया? उसकी जस्टिफिकेशन के सवालों के जवाब के लिए देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। सही। सर एक इसी टाइप की पेशेंट विच आई इन काउंटर, शी इज अ 40 ईयर। सर मैं समरी जस्ट सुना सकती हूँ ताकि उसकी जस्ट डिस्कस करना चाहती हूँ जस्ट इन द 5 मिनट्स। जल्दी कर इट दो वाज अ क्योंकि डॉक्टर सर शनाज भी आज ही होंगे, तुम्हारी क्लास भी स्टार्ट होगी। सर हाँ जी। अगर यही काइंड ऑफ पेशेंट हो जिसकी HbA1c ऑन द 7 वीक्स HbA1c 10.5 है, तो ओके। सर ऐसे पेशेंट और शी वाज ऑन मिक्स स्टार्ट 70-30 ऑन अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स। सर तो ऐसे पेशेंट शी वाज कमिंग ऑन द OPD फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि समवन इज काउंसलर, देयर इज अ कंजेनाइटल रिस्क ऑफ द कंजेनाइटल एनोमलीज। तो सर अगर 10.7 उसकी सिर्फ 7 वीक्स के ऊपर है जिसमें कार्डिक एक्टिविटी भी आई हुई है, तो हम लोग इसको चलाएंगे? टर्मिनेशन तो ऑफर नहीं करेंगे ना ऐसे पेशेंट को, हम लोग नहीं कंटिन्यू तो ऐसे ही करेंगे ना कि नहीं 11 वीक्स पे हमने उसका नकल थिकनेस करवा दिया, अगर उसमें कोई बड़ी भी आती है देन वी कैन थिंक फॉर द टर्मिनेशन। और 18 टू 20 वीक्स पे हमने एनॉमली स्कैन करवा दिया, तो फिर हम लोग उसको ऑन दैट बेसिस हम लोग काउंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज 10.7 और अभी वो कंसीव करके आई है, तो दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन फॉर अस कि हम उसको टर्मिनेट करें। काइंडली थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा बताइएगा। इट्स वेरी सिंपल। देखो आपने इस स्टेज के ऊपर इंसिडेंस ऑफ कौन सी एनॉमलीज और कितने परसेंट है, मुझे आप ये बताओ। सर मोस्ट लाइकली तो कार्डिक एनोमलीज होते हैं, क्योंकि नकल थिकनेस से तो हम लोग कार्डिक को ही ज्यादा पिकअप कर सकते हैं अच्छा। और दूसरी एनोमलीज तो नहीं कर सकते। डाउन सिंड्रोम्स अदर्स हैं, मगर राइट नाउ वी आर कंसर्न विद द डायबिटीज फॉर द कार्डिक एनोमलीज राइट नाउ। ओके फॉर द कार्डिक वन, ओके फाइन। यस सर। इंसिडेंस कितना है उसका? सर और सिर्फ कार्डिक 25%। ट्वेंटी कितना? फाइव परसेंट 25%। अब 25% है, दैट मीन्स कि 1 in 4 हो गया। एग्जैक्टली। दैट मीन्स कि हर इस तरह की अगर आप करोगे, मतलब है कि 4 करोगे तो उनमें से एक बच्चे को ये हो सकता है। अब एग्जैक्टली। दिस थिंग हैज टू बी informed to the patient, both the parents। हम्म। अगर तो they are willing to take this risk, और इसकी कंफर्मेशन जो होगी, जो कार्डिक वाली होगी, वो जाके होगी नॉर्मली एट 20 वीक्स पे। जी। ठीक है। अगर उसके पहले लेस पोस्ट सेक्शन हुए हुए हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है, तो 20 वीक्स के ऊपर टर्मिनेशन अगर वो हो जाती है तो वो कितनी आसान मुश्किल होती है। हम्म। टॉटमी का इंसिडेंस बढ़ जाता है। एक हम्म। नॉर्मल डिलीवरीज हुई है तो ये सारी चीजें एवेलुएट करने के बाद यू विल टेल द पेशेंट कि जी इस स्टेज पे सिंपल डीएनसी है जो काइंड ऑफ हैव इट डन, सिंपल होके एक दिन का प्रोसीजर आगे चला जाता है।
अगर हम 20 वीक्स में जा रहे हैं तो फिर बाद में एक्सपल्शन की बात आ जाती है, वैक्यूएशन की बात आ जाती है, स्टॉटमी की बात आ जाती है। अगर स्टेज में पकड़ा जाएगा या स्टेज में पकड़ा जाएगा, इंसिडेंस 25% है, यस देयर इज अ गुड चांस ऑफ 75% नहीं कुछ होगा। ये चॉइस वुड बी गिवन टू द पेशेंट एंड देन दे विल डिसाइड प्रैक्टिकली। मैं बात कर रहा हूँ जी। एग्जाम में जब आप बैठे होगे, वहां पे एग्जामिनर कह देगा अच्छा जी डॉक्टर साहब, पेशेंट कहती है आप बताएं क्या करना चाहिए। अब यू हैव टू वेट आउट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। सर फिर तो हम लोग मल्टी डिसिप्लिन टीम इन्वॉल्व करेंगे, एज अ फिजिशियन, एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन माई सेल्फ, पीडियाट्रिशियंस एंड द डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हुए इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे विथ गुड कंट्रोल, क्योंकि अभी वो 70-30 मिक्सटार्ड ले रही है, तो डेफिनेटली शी शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैरल जे फार्मूला के हिसाब से we have to count her insulin and calories requirement with the good modification of the lifestyle modification with the exercise diet. We have to keep the good control on her diets. फिर हमें कंटिन्यू करनी चाहिए उसके साथ। मैं आसान कर दूं उसको थोड़ा सा। जी जी प्लीज सर। ये डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन जो है, उन्होंने आके आपको यही सारी इंफॉर्मेशन देनी है ना कि इसका इंसिडेंस कितना है, हम इसको किस तरह कंट्रोल करें, वो ठीक है, दैट इज फेयर इनफ। मैं वो मरीज इस किस्म का जिसके पहले लेट्स सपोज 3 बच्चे हैं, 3 सेक्शंस हुए हुए हैं, उसकी मैनेजमेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू और वो सारे ठीक ठाक हैं, वो डिफरेंट होगी। एक वो पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के साथ आता है, प्राइमी है, उसकी मैनेजमेंट फर्क होगी। एक वो मरीज जिसके पहले 3-4 बेबीज हैं, सारे नॉर्मल हैं, अब वो 10.5 पे आ जाती है, उसको इनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है, उसको मेरी काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इजियर कि जी 1 in 4 चांस है, तो इट इज बेटर कि हम इस पेशेंट को इसको टर्मिनेट करें। अगली दफा जब आपकी प्रेगनेंसी होगी उसमें उससे पहले ये वाले स्टेप्स हमने लेने हैं और फिर हम आगे जा सकते हैं। एक वो मरीज जिसने कंसीव 10 साल के बाद किया हुआ है और अब आ गई है, उसमें यस वी कैन से कि जी हाँ जी लेट्स सी, अब ये 10 वीक्स हैं, 10 वीक्स के बाद हम इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे हम ये करेंगे और इस टाइम पे हम ये करेंगे, और इन सब को सारे की सारे स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू करने के बाद ये डिसीजन हमारा फाइनल जो है, इट कैन बी टेकन एट 11-12 वीक्स पे, इट कैन बी टेकन एट 20 वीक्स, और इट माइट कंटिन्यू एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी टिल दैट। So it is not across the board, it is according to the patients के हिसाब से सारी चीजें आप करोगे। वो आप ये नहीं कर सकते कि जी कि जिसका 10 Hp A1c आ गया है सबको कहोगे जी आप तो नहीं, आप बिल्कुल टर्मिनेट करो। आई हैव सीन पेशेंट जिनका डाउन्स भी डायग्नोज हो जाता है, वो अपनी टर्मिनेशन नहीं कराते। इट इज देयर चॉइस इनके उसमें आपकी लेट्स सपोज वो ट्यूमर मार्कर्स रेज्ड हैं या एंटी रेज्ड है, और इवन आगे जाके एमनोसिंथेसिस तो हम करते ही सिर्फ उस पेशेंट में मैं हूँ जिसमें पेशेंट ये मुझसे विलिंगली एग्री करे कि जी हाँ इसमें अगर आ जाएगा तो हम टर्मिनेट करेंगे। जो ये कहे कि जी अगर इसमें पॉजिटिव भी आता है मैंने फिर भी टर्मिनेट नहीं कराना, उसमें फिर एमनोसिंथेसिस का आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रोल। वो जब बेबी डिलीवर होगा उसके हिसाब से हम देखें। डू यू अंडरस्टैंड दैट ऑल? ये समझ आई मेरी बात के नहीं है? जी जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। चलो सर ये जो सेम पेशेंट इन्होंने प्रेजेंट किया था 14 वीक्स पे, सर हमें इसको ये नहीं मेंशन करना चाहिए था पहले तो इसकी प्री प्रेगनेंसी उसने काउंसलिंग नहीं ली, मतलब उसकी कोई असेसमेंट नहीं हुई थी, और इसके अलावा उसका Hp A1c हमें रेट्रोग्रेड कंट्रोल बता देता, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको काउंसिल करना चाहिए था। क्योंकि सर मतलब अगर हमारे पास पोस्ट अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है और मतलब इसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसे लेकर चल सकते थे। और दूसरा सर देखो बेटा, इसमें तो उन्होंने हर चीज पहले ही ये सिंपल कर दी थी। जो ये सारा केस है कि बाय द टाइम ये केस प्रेजेंट हो रहा है इसकी ब्लड शुगर भी उन्होंने कंट्रोल कर दी है, Hp A1c भी 5.5 आ गया है, सारा कुछ ठीक आ रहा है। वो अनश्योर ऑफ डेट्स थी लेकिन उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन भी हुआ हुआ है 7 वीक्स के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको कॉरेस्पॉन्ड भी हर चीज कर रही है, तो दैट इज फाइन। वो तो हम ओके सर वो तो अब आगे जाना कहाँ है, वो तो एक अलग कहानी थी।
जी सर, मतलब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और सर जो दूसरा इन्होंने पूछा था सर, डायबिटीज इज अ रिस्क फॉर IUGR ऑल्सो, मतलब उसमें हम 28 वीक से सर्विलेंस स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल अगर सर 28 वीक्स पे नॉर्मल आ जाता है डॉपलर, तो फिर हम अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर साइन सिम्टम डेवलप हो, ब्लड प्रेशर कहीं डिटेरियोरेट करे, देन अकॉर्डिंगली हम डॉपलर करेंगे, या अदरवाइज हम डॉपलर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। मेरा तो ख्याल है कि 28 वीक्स पे उसकी ब्लड शुगर वगैरह कंट्रोल्ड आ रही है और कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं आ रहा, हर चीज स्मूथली चली जा रही है, पेशेंट एजुकेटेड है, सब कुछ है। दोबारा डॉक्टर आई डोंट नो कि 4 वीक्स के बाद रिपीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ऑनेस्टली, क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड 4 वीकली लिख के देते हैं तो वो डॉक्टर खुद ही करके दे देते हैं। जी सर, It's बिल्कुल। automatically done with their whatever the ultrasound they do, उसमें उनको ज़्यादा टाइम, डॉपलर मशीन उनके पास है, वहीं वो रख के करके फौरन बता देते हैं। पर आई सपोज के जो ये हाई रिस्क है और इस तरह आ रहा है, फॉर यू इट इज इजीली जस्टिफाइबल कि जो गाइडलाइंस में कहते हैं कि जिसको आप ग्रोथ स्कैन्स और ये सारी चीजें कराते रहो, तो कराते रहोगे तो उसको एग्जाम में डिफेंड करना आसान है rather than not doing it. ओके, थैंक यू सर। सर चलो एग्जाम आपकी में क्वेश्चन फीचर्स। आज आ गई बेटा, आई सर थिंक। एक क्वेश्चन, सर एग्जाम में सोनिकेट यूज कर सकते हैं फीटल हार्ट्स के लिए? मैंने आज तक कभी किसी को करते नहीं देखा और जेब से किसी ने निकाला नहीं, लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट अगर ऐसी कोई चीज़ आप लेके जाओ एग्जाम में साथ लेके जाने के लिए, तो जब आपको शुरू में आके ब्रीफिंग की दी जा जाती है बाय द चेयरपर्सन जो एग्जाम का होता है, उससे आप यू कैन आस्क देम कि जी कैन वी यूज द व्हील, कैन वी यूज द सोनिकेट, वो बता देंगे आपको। सोनिकेट मैंने अभी आज तक कभी देखा नहीं और आई डोंट थिंक सो कि दे इवन अलाउ, क्योंकि उस टाइम पर भी आप जाके अगर सोनिकेट से सुन रहे हो तो फिर मेरा ख्याल है जो एग्जामिनर है उसको शक बढ़ जाएगा आपकी क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर। सही सर। सर आई हैव माय एग्जाम ऑन 19th of January in the next week, sir. So चलो let's गुड see. लक बेटा, So thank you, sir. जस्ट कीप इट सिंपल और वही करो जो एग्जाम में करते हो, लेकिन आपने ये जाके नहीं कहना कि जी हमारे डिपार्टमेंट में ये नहीं होता तो हम ये नहीं करते। Ji sir, I'm going to review these tests. I actually forgot the names. Uh, ये तो बेटा so बेसिक चीजें हैं, अगर sir, एग्जाम triple देना है test, quadruple test, and sir. इसमें आप जाके सारा आज ये अपना एंटी का एनॉमलीज के लिए एमिनोसिंथेसिस CVS ये सब कुछ गो थ्रू दैट, जी प्लीज गो सर। थ्रू दैट। और मैंने किसी किताब में आज तक EBM तो मेरे मन में शायद थी भी नहीं, हाइड्रेशन और ये लाइकर का मैंने नहीं पढ़ा। Sir, रेस्ट यस, वो कहते हैं कि जी आप लेफ्ट लेटर लेटे रहो तो शायद ब्लड फ्लो ज्यादा जाती है, वो हो जाता है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेड या कोई ऐसा रिलायबल पेपर अगर है तो उसकी जरूर रेफरेंस साथ लेके जाना। जी सर जी। ये जो एम्पेरिकली हम कह देते हैं ना कि जी ये नहीं करना, फलां चीज नहीं करनी, वो एग्जाम में एग्जामिनर एक एक बात को आपको पकड़ लेते हैं, तो जी यू सर। नीड टू काइंड ऑफ डिफेंड दैट कि उस चीज को आपने डिफेंस कहाँ से लेके आनी है। सिर्फ ये कह देना कि जी कि हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी प्रोफेसर साहबा तो कहती हैं कि जिनको पानी पिलाई जाओ, पानी पिलाई जाओ, उससे हाइड्रेशन से लाइक ठीक हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन आपको साइंटिफिक देनी पड़ेगी एंड जी रीजनिंग। सर। जी सर। ठीक है, एंड गुड लक जी विद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो जी, ओके जी।